Okay, so here is the some of the design callback methods. In the last video we just discovered the types of callbacks, but here is the use cases, how the design callbacks are there, how this is working. So we are just giving the guardrails and policy enforcements. So basically guardrails, what is the guardrails? So guardrails is basically like to restrict the use of the particular text recognitions and all. So intercept the request before they reach the LLM or tools to enforce the rules. Use the before models to inspect the LLM request prompt a before model callback to inspect the tool arrangement. So argument, sorry. If a policy violation is detected, then forbidden topics and profanity, or if they want to return any of the JSON that you can just return that the context state to directly passes to the LLM response, and LLM say this is not a relevant response and all. So this is like the example. That is how the things that which is going on. Dynamic state management, that we are just by defaultly I am saying like how we can just use, like we taking a some particular example. हम यहाँ पर example लेके चल रहे कि एक language के through हम एक language assign कर रहे हैं एक state में during the initialize of the model, and at that point if the users want to change that state, so they can able to change the state with their particular requirements, and that state should be updated and should be like intercept that prompt in a particular thing to changing their state. लाइक अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर मुझे हिंदी में बात करनी है तो ये वो जो हिंदी वाला टैग मेरे प्रॉम्प्ट में डायरेक्टली इंटरसेप्ट यानी अटैच्ड हो जाएगा, that which is only reliable on the spot of state. Okay, so this is how the language transmission and all is working. And the third is the login monitoring is the very best thing we can just do. ये तो हम करते हैं कि लॉगिंग और मॉनिटरिंग भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो लॉगर हम हमेशा लगा के रखते हैं बिफोर एजेंट कॉलबैक और आफ्टर एजेंट कॉलबैक की कभी कभी हमारे आर्ग्यूमेंट्स में दिक्कत आ जाती है, हम कुछ डेटा सही से पास नहीं कर पाते. ओके, सो दिस इज हाउ द लॉगिंग और मॉनिटरिंग है. फोर्थ पार्ट इज कैशिंग. कैशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द रीज़न इज कैशिंग इज़ टू passing the data that in that manner in such a way that if we are just storing the data like in a JSON and giving the data to the ADK during the session start, कि अगर मैं चाहता हूँ कि एक यूज़र का डेटा मेरे स्टेट में जाए और वो कैशे में स्टोर है और वो डेट विच शुड बी गेट ड्यूरिंग अ बिफोर मॉडल कॉल बैक, एंड वो डेटा डायरेक्ट यूज़र का उसको जिनके पास जाए जब भी कॉल करे तो एजेंट को इतना पता हो कि वो यूज़र कौन है. जस्ट टेकिंग द केसेस ऑफ द यूज़र. ओके सो एंड द फिफ्थ पार्ट इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन. ये तो हम समझते हैं कि हम रिक्वेस्ट में क्या चेंजेस करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स में क्या चेंजेस करना चाहते हैं. कंडीशनली स्कीपिंग ऑफ द स्टेप्स, कि हम चाहते हैं कि अगर मान लो कि ये केस या API का ऐसा केस है कि और ये कुछ कीवर्ड्स आएंगे और कुछ केसेस आएंगे, तो उस केस में हम उसको ये बोल सकते हैं कि वो स्किप करे स्टेप्स या फिर वो मॉडल यूज़ ना करे और देन ऑल एंड ऑल. सो दिस इज़ द लाइक द 6 पॉइंट. एंड द 7th पॉइंट टूल स्पेसिफिक एक्शन. लाइक हम ये चाहते हैं कि हम ऑथेंटिकेशन या मिडल वेयर भी दे सकें. मिडल वेयर इज़ द अनदर टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम इसकी सिक्योरिटी लेवल बढ़ा सकें तो डेट्स द ग्रेटेस्ट और लाइक आई एम सेइंग लाइक द बेस्ट पॉइंट do giving this answer in this way. Artifact handling, artifact in the such a way that you are just handling particular documents and all and docs. So this is how the relevant things and all works. And the best practice of the callbacks is keep focused, mind performance, handle errors gracefully, try catch you are using, manage the state carefully. That's very important. If you are just managing the state accordingly, that taking the sum of the state by the persistent and consistent state, and consider the item potency and like external side effect, the increment and all. So on that way we can just use this part. Test thoroughly, ensure clarity, and use the correct context type. The type is very important to recognize the tool context part and all. So by applying these patterns, we have the best practices to making the robust application and all for the creating the callbacks function. So this is all about the callbacks part. We are just on the next video, we are just going through the implementation of the callbacks. Thank you.